अच्छा जी, तो yesterday we ended our chapter number 1 which was atomic structure। उसके अंदर हमने structure of an atom, subatomic particles, their mass, charge, फिर हमने isotopes को discuss किया था। Now we'll be starting off with chapter number 3 which we call as electrons in an atom। Electrons in an atom के अंदर we going to be covering three topics। Number 1 we have subshells and atomic orbitals। Number 2 we have electronic configuration, and then we have ionization। This is a relatively large chapter और एक क्वेश्चन कंफर्म इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम से आता है। चैप्टर नंबर 1 के रेयर होते नहीं आते क्योंकि आईजीसीएसई कॉन्सेप्ट है मोस्टली। इलेक्ट्रॉन्स एंड एन एटम का एक सवाल कंपलसरी आता है, ऑब्वियसली होगा। We'll be describing the number and the relative charges of s, p, and d orbitals for the principal quantum numbers, shapes of s and p orbitals, electronic configuration, ionization energy, trends in ionization energy, successive ionization energy, and how do we interpret it from the periodic table is included in your learning outcomes. So starting off with subshells and atomic orbitals, what is a principal quantum shell? Now electrons are arranged outside the nucleus in energy levels or principal quantum shell। ये जो शेल्स होते हैं हम इनको या तो एनर्जी लेवल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल मेरा है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड शेल वुड बी माय सेकंड एनर्जी लेवल, और वी आल्सो कॉल देम द प्रिंसिपल क्वांटम शेल एन। मतलब कि फर्स्ट शेल होगा एन वन, सेकंड शेल होगा एन इज इक्वल टू टू, ठीक है ना। थर्ड शेल क्या होगा, एन इज इक्वल टू थ्री, या थर्ड एनर्जी लेवल। द प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू हाउ फार आर दे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होगा दैट वुड बी नंबर्ड एज वन, then it would be 2, 3 or 4। 4 सबसे बाहर वाला होगा। जितना बाहर जाए, I think that quantum number shell would increase। So the lowest energy level is of n is equal to first shell, which is the closest to the nucleus, and the energy level n is equal to 2 is further out, and so on। तो जितना दूर जाते जाएंगे ये shells, your energy level would also increase। The electrons in energy level further away from the nucleus have more energy and held less tightly by the nucleus। Electrons do not move in fixed circular paths, they occupy a space called the atomic orbitals। The total number of electrons that can occupy any principal shell is 2n square, where n is the principal quantum number। ये 2n square क्या है ये भी हम आगे देखते हैं, that how we use this to fill the subshells। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये फॉर्मूला डालें टू, एन की जगह मैं क्या लिखूंगा थ्री। मैं थर्ड शेल की बात कर रहा हूँ, आई बी राइटिंग थ्री, और यहाँ पे सात स्क्वायर रहेगा। तो थ्री स्क्वायर हमें पता है नाइन होता है, तो टू इंटू नाइन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ठीक है भाई, जो थर्ड शेल है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। So the total number of electrons that can occupy any principal shell is 2n square, where n is the principal quantum number। इसी तरह अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, टू, टू स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे, फोर स्क्वायर is equal to 8। So 8 electrons can be occupied in the second shell। So this is what we call as the principal quantum shell।